Good morning, students. How are you all? Good Good morning. morning. Good morning. Students, today we are going to learn a very interesting topic. But before starting the topic, I am going to show you few products. On the basis of that, I will ask you few questions. If any one of you know the answers, just respond them individually. Don't give collective response. Students, see the product carefully and tell me what is the name of this product. Lace. Very good. How you come to know that this is lace? Printed on the back. Very good. It's written on pack. So what other information is written on the pack for the consumer? Ingredients. Ingredients. Yes, very Price. good. Its Yes, price, ingredients, yes, very good, Navneet. use by date, brand name, Yes, brand yes, name, very exactly. good. So what term will you use in commerce which contains all the information about the product? Labeling. Labeling. Labeling, Yes, very good. So well students, today we are going to learn about labeling and its function. Students, open your notebook and write down the meaning of labeling. Labeling means putting identification, marks on the package. A label mentions everything on the package which the seller want to communicate to the consumer. For example, manufacturing date, expiry date, then the price of the product, and all the other information which the seller wants to communicate to the consumer. Students, is the meaning of labeling clear to you? Yes? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay, very good. Now let's move further. Next, we are going to do is functions of labeling. Write down the first point, describe the product and specify its content. The label of the package describes the product properly and all the contents which the product contains. Some information cannot be communicated directly by the seller to the consumer. So, he mentions it on the outside of the product. Let us understand this with an example. Students, tell me what is the name of this product? glue stick, Fevistick. Yes, Fevistick or glue stick. So as you can see, the various features are written on of the glue stick here. Like it dries fast, then it's washable. So all the information and the contents with which it have been made have been mentioned by the seller on the outside of the label. So the first feature of labeling is
identify its contents. Write down the next point, that is product identification. By seeing the label of the product, you can easily choose the different brands which are available in the market. For example, whenever you visited a market, you can easily see that which is your favorite flavor. Let us understand this with an example. Students, here I am having 2 packets of Lay's. Which is your favorite flavor? Green one. Green. Which one? Green one. Okay, green one. So how you come to know that it's the flavor of American style? So how you come to know that this is your flavor, that this flavor you like? It's printed on the packet. Yes, it's written. It means it have been properly labeled it out. So you can easily identify your product by seeing the label of a product. Is the point clear to you, students? Yes. Okay. Now, ठीक है बच्चे, बस करो बच्चे, फीडबैक दो। शाबाश, फीडबैक दो। पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स बच्चे ਨੂੰ ਦੱਸੋ। सर रियल प्रोडक्ट्स यूज किए थे। हाँ, रियल प्रोडक्ट्स यूज किए थे, वेरी गुड। Sir, real objects is very well explained with the points you want to explain. ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट बात है ना, इसने सारे रियल ऑब्जेक्ट ड्रॉ भी किए हैं कॉपी में, सेम एज इट इज। ठीक है ना, वो भी बहुत अच्छा है। और पीके टेस्टिंग अच्छी है, हैंड राइटिंग भी इसकी ठीक है। बच्चे कैमरा ऑन करो। yes, sir. हैंड राइटिंग भी इसकी ठीक है, ब्लैक बोर्ड राइटिंग पे। पार्टिसिपेशन भी अच्छा है। एक प्रॉब्लम जो मुझे लग रही है कि एक ना आपने अंडरस्टैंडिंग का जो पहला ऑब्जेक्टिव लिखा है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, देखो Yes, sir. स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रिकॉल। तो रिकॉल तो अंडरस्टैंडिंग का एक्शन वर्ब Yeah, नहीं है, ठीक है सर, इसको ठीक करना है ना बच्चे। ठीक है सर, समझ गई। हाँ। और एक जो रिकैप्चुलेशन में जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं वो सिर्फ 2 ही हाँ जी। क्वेश्चन है। ये सारे बच्चे ध्यान से सुनो, रिकैप्चुलेशन में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन लिखे हैं आपने। तो कितने मेंशन करने वाला? 4 टाइम्स बच्चे बहुत 4 बहुत है। देखो, मैं बताता हूँ, जो हमने अपना ऑब्जेक्टिव रखा है कि बच्चा डिफाइन कर सकता है लेबलिंग को, बच्चा उसके फंक्शंस को डिफाइन कर सकता है या एक्सप्लेन कर सकता है इन देयर ओन वर्ड्स, है ना। आप उसमें कोई 2 फंक्शंस को अलग अलग करके भी एक्सप्लेन करवाया जा सकता है, 2 फंक्शंस में डिफरेंस पता किया जा सकता है, फिलिंग द ब्लैंक्स करके हम फंक्शन का पता लगा सकते हैं भी इसमें क्या क्या है। ठीक है, तो जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो फुलफिल होने चाहिए, हमारे चाहे लेसन में फुलफिल हो जाए या हमारे रिकैप्चुलेशन में फुलफिल हो जाए वो। ठीक है, ओके। जैसे हमने कहा कि बच्चा जो है वो डिफाइन कर सकेगा लेबलिंग, तो आपने एक क्वेश्चन रिकैप्चुलेशन में पूछ लिया व्हाट इज लेबलिंग। ठीक है ना। तो इसमें हम ये कहते थे कि डिफाइन लेबलिंग। समझ आ रहा है मेरा पॉइंट? हाँ जी, हाँ जी कि सर। जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो हमारा उस लेसन प्लान के अंदर कवर होना चाहिए। जो हमने सोचा है कि हम इस लेसन के बाद बच्चे को ये इतनी चीज आनी चाहिए, तो वो हमने कहीं ना कहीं उसकी टेस्ट भी करनी है। ठीक है सर। चाहे तो ड्यूरिंग द लेसन टेस्ट कर लो या एंड में रिकैप्चुलेशन में टेस्ट कर लो कि वाकई बच्चे को उतना समझ में आया है कि नहीं आया। ठीक है, तभी हमें पता लगेगा कि ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, ठीक है सर। हाँ जी। हाँ, वेरी गुड बच्चे। ओके चलो नेक्स्ट स्टूडेंट। Morning to all present. How are you all? फाइन। Okay. Students, today we are going to start a very interesting topic
But before starting the topic, I will show you some objects, and on the basis of those objects, I'm going to ask you some questions. Please respond. But if you know the answer, just raise your hands. Don't give collective response. Fine? Okay. So look at this product carefully. So my question is, what is this? Soap. Soap. Yes, it is a soap. Very good. My next question is, after carefully examining this product, tell me what is written over here. Kitchen king. Yes, very good. Now have a look on this product carefully and tell me what is this. Vaseline. Yes, it is a body lotion. Yes, very good. Students in commerce, what do we call all the objects that I have just shown you? Products. Very good. Products. So, students, our today's topic is product and its classification. Product and its classification. Take out your notebooks and write down the meaning of product. Product is anything that is offered to market to satisfy the need or want. Students, listen carefully. We have just written the meaning of product, which says a product is anything that is offered to market. Why do we offer a product to the market? So that we can satisfy the need or want. And there can be many examples of product. For example, it can be a car, it can be milk, it can be anything that satisfies our need or want and is offered in the market in order to satisfy our need. Is the meaning of product clear to all? Yes, ma'am. Okay, very good. So let us start the classification of product. Classification of product. Under classification, we have our first type, which is consumer products. Consumer products. Under consumer products, we have further classified them in two parts. And first part is shopping efforts involved. So, consumer products, under consumer products, the first classification is shopping efforts involved. So, under shopping efforts, we have number one, convenience products. Convenience products. Students, listen carefully. Convenience products are those kind of products that involve minimum or least shopping efforts. In buying such kind of products, we do not, we don't need to compare the price to that level, and we involve very least shopping efforts.
least shopping efforts are involved. That is why they have been kept under the classification shopping efforts involved. Under convenience products, the amount of efforts involved in shopping these products is least. And moreover, convenience products are also called those type of products that are used frequently. What do we mean by the word frequently? Regularly. Sorry, can you repeat? Sometimes. कभी कभी. Frequently, Regularly. frequently means repeatedly. Frequently means repeatedly. When we buy some products repeatedly, that is that they are used almost on daily basis. I will make this point very much clear with an example. For example, write down. There can be numerous examples of convenience products like bread, or we have medicines, right? These are such kind of products that can be bought with least shopping efforts. Now look at this flashcard very carefully. These are the examples of convenience products. For example, while buying medicines, we don't need to, involve lot of shopping efforts because we buy the medicine according to the doctor's prescription. Eggs and ice cream, right? So these are frequently, that is almost repeatedly, and these involve least shopping efforts. So is the point clear? Convenience products. Yes. Yes. बच्चे बस करो फीडबैक दो बेटा Sir, we cannot buy शाबाश medicines frequently. I mean, there is no use of medicines on regular basis. हाँ मेडिसिन भी खरीद सकते हैं बट वो कन्वीनियंट पर I mean ठीक है prescription ਦੇ according ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਭੀ ਨੇ explain ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ frequently ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ purchase ਥੋੜੇ ਨਾ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਹੋਏਗੀ हाँ लेकिन What हाँ I वो think कन्वीनियंस is फूड्स नहीं लगा यही कह रही है ना बच्चे हाँ ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੀ ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸ਼ੁਭੀ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਲੈਸਨ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਸ਼ੁਭੀ Sir, actually वो least shopping efforts involved वाला point था उसके साथ वो example दी हुई क्योंकि इसमें डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ज्यादा कंपेयरिंग नहीं करते चलो अब ठीक है बच्चे एक तो अच्छी बात है कि आपने जो पिक्चर्स हैं वो खुद ड्रॉ करी हैं ठीक है गुड वेरी गुड लेकिन ना कुछ पॉइंट्स हैं अब ना ये सारे बच्चे ही सुनो कि अब हमें बोलना तो आ गया है ना ब्लैक बोर्ड पे लिखना भी आ गया कॉन्फिडेंस लेवल भी आ गया ब्लैक बोर्ड राइटिंग भी सारी अच्छा हो गया सब कुछ अच्छा हो गया अब ध्यान दो थोड़ा सा और लेसन में गहराई में जाने का ठीक है टेक्निकल पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए बात करनी है एक तो जो आपने स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लिखे हैं ना वो मतलब रिस्ट्रिक्ट ना हो कि एक ही नॉलेज का ऑब्जेक्टिव होगा या एक ही अंडरस्टैंडिंग का होगा ठीक है वो सारा ही वो एक या दो भी हो सकते हैं क्लियर है बच्चे एक ज्यादातर में सभी बच्चों का मैं देख रहा हूँ प्रॉब्लम आ रही है प्रेजेंटेशन ऑफ टॉपिक में प्रेजेंटेशन ऑफ टॉपिक में आप लोग क्या लिखते हो पीपल टीचर विल प्रेजेंट द टॉपिक यूजिंग लेक्चर कम डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड या लेक्चर कम डिस्कशन मेथड है ना
तो डिमॉन्स्ट्रेशन भी हम कर सकते हैं। और इसमें एक बात जरूर लिखनी है कि प्यूपल टीचर विल आस्क क्वेश्चंस टाइम टू टाइम फ्रॉम स्टूडेंट्स फॉर देयर एक्टिव पार्टिसिपेशन। ये लाइन लिखा करो, तभी हम बीच में भी क्वेश्चन भी पूछने हैं फिर बच्चों से बीच में, है ना, जो हम क्वेश्चन पूछते हैं। और एक आपने एंड में जो काम दिया है, लर्न एंड राइट क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स विद एग्जांपल्स इन योर नोटबुक, है ना। तो ये तो फिर लिखने वाला ही काम हो गया ना, कुछ प्रैक्टिकल कुछ अप्लाई करने वाला काम दो कि इनकी पिक्चर्स इकट्ठी करो। ठीक है, हम ऐसा इसमें कुछ कह सकते हैं कि सैंपल्स ऑफ प्रोडक्ट के जो है वो इकट्ठे करो आप लोग। और रिकैप्चुलेशन में भी सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स ही हैं, 3-4, 1 2 3 देख पा रहा हूँ मैं, है ना। तो इसमें इसको मिक्स करिया करो, कोई शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछ लो, या 3 आपने फिल इन द ब्लैंक्स कर ली, 2 ट्रू फॉल्स भी कर लो, ठीक है ना। क्योंकि ये हमारी बड़ी क्लास है, +1 या +2 क्लास है। छोटी क्लासों में हो जाता है, चलो 2-3 फिल इन द ब्लैंक्स पूछ लिए, ट्रू फॉल्स पूछ लिए, लेकिन बड़ी क्लास है तो उनके लिए तो फिर ये रिकैप्चुलेशन बहुत छोटा हो जाएगा। क्लियर है बच्चे? हाँ, एक फ्लैश कार्ड का पॉइंट मैंने बताना था, ये सब बच्चे सुनेंगे कि फ्लैश कार्ड का मतलब ये होता है कि एक फोटो दिखानी है एक टाइम पे, एक साइड पे एक ही फोटो होगी, ठीक है। वो 3 फोटो नहीं हम दिखाएंगे। हाँ, मैंने पहले भी बताया था कि हम उसकी बैक साइड यूज कर सकते हैं दूसरी फोटो दिखाने के लिए, ठीक है। और इसका ठीक है, आपने मार्जिन लगाया, लेकिन इसका वो स्टिक नहीं लगाई नीचे पकड़ने के लिए, वो फ्लैश कार्ड में जरूरी है बच्चे, ठीक है। और जब हमने 2 पिक्चर्स दिखा दी तो हम थर्ड एग्जाम्पल हम बच्चों से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। उसमें पीपल पार्टिसिपेशन हमारा बढ़ जाएगा। अदरवाइज लेसन अच्छा है। ये सभी बच्चों के लिए पॉइंट्स हैं, भी सारे बच्चे ध्यान से सुनो इन पॉइंट्स को, ठीक है। हाँ जी सर। यस सर। सुना है सबने? हाँ, हुन थोड़ा जा टेक्निकल पॉइंटां दे ਵੱਲ भी ਵਧੋ। जो मोटी जी गल सी ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ, लेकिन ਹੁਣ अपने ਲੈਸਨ ਪਲਾਨਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕੰਟੈਂਟ ਵਾਈਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। Very good morning. Today we are going to Good learn morning. a very interesting topic. But before that, I will ask you a few questions. Do not give collective responses. Students, where T is reduced? Assam. Yes, Assam, very good. Where the tea is consumed? All over India. Yes, all over India we consume the tea. What term do we use for the middleman who distributes the goods from one place to another? Channels of distribution. Yes, channels of distribution. Today we will learn about the functions of channel of distribution. Students, channel of distribution plays a very important role in the economy as the consumers are widely spread, whereas producers are limited. The producers cannot go to each and every consumer so that they can sell the products. So, the channel of distribution plays an important role. They act as a middleman for the goods to be consumed by the consumer. Students, first of all, write the definition of channel of distribution. It is an individual or set of firms who takes the title
producer to consumers. Students have written the definition or the meaning of channel of distribution. Yes. Very good. See students, it is a set of individuals. Now the middleman not only involves a single person, they can be more than one middleman. They take the title, means that they take the possession of the goods from the producer so that they can sell the goods to the consumers. Students, to make the thing more understandable, I will give you an example. Students, see this flashcard. There are supposed there are three consumers in the market, A, B and C. Now, if they want these three products of different types, what they will do if there is no middleman? They will first of all reach to a single producer in the market. Now, this process is very messy and it involves various problems. But if there is a middleman, what will happen? The things become easy and the work will be done in a systematic way. Right? All the three consumers will generally be go to a middleman and the middleman takes the products from the producers. Students, is the point clear? Yes, ma'am. Very good. Let's move towards the functions of channel of distribution. Students, the very first function of channel of distribution is sorting. Sorting means when you take the goods from the producer, they are a middle. I will take the goods from variety of producers, right? And then what I will do, I will put this variety of goods into a homogeneous stock so that it is easy for me to further send the goods to the consumer. Students, see over here, suppose there is a middleman who takes the rice from three different producers. After taking the rice from these producers, what the middleman will do? He will allot these the goods according to the price as well as according to the quality. Suppose the rice are taken by middleman and what they will do, they will allot or sort of things with rupees 30, 80 or rupees 120 and so on. It is not essentially that we are sorting on the basis of three only. We can sort on the basis of more than three according to the price as well as according to the quality of the product. The next function of channel of distribution is accumulation. Accumulation means when we get the things into a stock. The middleman, what he do, he takes a variety of stock. Now tell me students, why the middleman takes the goods in large number? Yes students, why the middleman take the goods in large number? Because he want to distribute in many shops. Yes, very good. Reduced cost. He can purchase at less cost, large quantity. Yes, very good. To maintain, yes, very good. All are correct.
he has to take the goods in large number to maintain the supply in the market. Right, students? Moving towards the third point. ठीक है बच्चे बस करो, लेकिन ये जरा क्वेश्चन पूछिया है बच्चे, बस कर मेगा बस कर, हाँ बस करो। ये जरा क्वेश्चन पूछिया है ये तुसी कापी च नहीं लिखिया? नहीं, जगह तो थी नीचे, आपने लिखा है प्यूपल टीचर विल आस्क क्वेश्चन फ्रॉम द प्यूपल, स्टूडेंट्स विल गिव रिस्पॉन्स। क्वेश्चन लिखो ना यहाँ, हाँ यहाँ नहीं, यहाँ क्वेश्चन और दूसरी तरफ आंसर लिखना है, ठीक है। हाँ, और जर्नल ऑब्जेक्टिव कम से कम 4 तो होनी चाहिए ना। आजकल तो एनसीईआरटी की किताब में भी ऊपर लिखा होता है जर्नल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। और आपने ब्लैक बोर्ड पे डेफिनेशन लिख के करवाई है, लेकिन कॉपी में जो ब्लैक बोर्ड लगाया उसमें डेफिनेशन नहीं लिखी। तो यही तो प्लानिंग है ना। हाँ हाँ, और वही बाकी तो कॉमन पॉइंट्स हैं बच्चे जो मैंने पहले बताए, ठीक है। हाँ, इसमें आपकी पीके टेस्टिंग अच्छी थी। ब्लैक बोर्ड राइटिंग जो पहले स्टार्टिंग में करी है ना, वो थोड़ी सी ऊपर को जा रही थी, जो स्टार्टिंग में डेफिनेशन लिखी है ना, हाँ वो ऊपर को जा रही थी। और जो आपने ये फ्लैश कार्ड बनाए हैं उस पे मार्जिन लगाया है दोनों तरफ? सर सिग्नेचर पे मार्जिन तो मैंने लगाया है चारों तरफ। इसमें नहीं दिखाई दे रहा मार्जिन, दूसरी तरफ हाँ जी सर, इसमें भी है। नहीं, दूसरी तरफ दिखाओ, इसमें तो है, ठीक है सर। इसमें नहीं दिखाई दे रहा। चलो हाँ ठीक है लगा। हाँ, वो सर मैं अभी लेकिन इसमें फिर वो स्टिक क्यों नहीं लगाई? हाँ, ये इसमें करना है काम, ठीक है। बाकी ठीक है बच्चे, वेरी गुड, करो शुरू। Good morning, class. गुड मॉर्निंग। Good morning, ma'am. Very good morning. So, students, today we will be doing a very new and interesting topic. So, before starting that topic, I will ask you a question and few more questions followed with two situations. The first situation is, students, listen to the situation very carefully so that you can answer the question I have asked to you. The situation is, the head of your organization has given you an activity of reading newspaper. You have to brought the newspaper to the school and you did that activity. The question is, what is the term called in commerce to do a task with a motive that is here reading of newspaper? Yes, please? Yes, right. Objective. Very good, Shweta. So the next situation is, listen to the situation. The situation is, suppose there are three friends, B and C. A is working as a CEO in a company, and B person is working in the manager, and the C person is working as a worker. So the questions are for this situation. First question is, at which level A is working as a CEO? Yes. टॉप लेवल, सीईओ टॉप लेवल। Yes. Right. Very good. At which level B is working? Yes, students. Middle level. Yes. Right. Right. One. At which level C is working? Lower level. Yes. बच्चे, Very good, Muskan. टॉपिक क्या कराना है? टॉपिक Yes, sir. Sir, objectives and levels of तो management. करवाना है ना।
तो आप लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के क्वेश्चन पूछ रहे हो। सर मतलब पूछना है ना कि वो टॉप मिडल और लेवल्स तो लोअर पता ही है बच्चे को पहले ही। पहले ही मैंने पढ़ाई नहीं यही तो मैं कह रहा हूँ, जो हमने पढ़ाना है। सर अभी उनको सिर्फ बेसिक मालूम है ना, उनके अंदर के जो पॉइंट्स है वो तो नहीं जो मालूम। हमने पढ़ाना है ना वो क्वेश्चन तो पूछना ही नहीं है ना। समझ में आ रही है बात, है ना। आपने टॉप सही है। लेवल, मिडिल लेवल और वो तो पढ़ाना ही है, लेकिन आपने सिचुएशन बता के बच्चे से पूछ लिया कि कौन सा टॉप लेवल पे है, कौन सा मिडिल पे है, कौन सा लोअर पे है। इट मींस ये बात उनको आती है पहले से। समझ रहे हो मेरा पॉइंट। तो ये चीज पीके टेस्टिंग नहीं हो सकती, ठीक है। पीके टेस्टिंग गलत है बच्चे। इसको चेंज करना है। ठीक है सर। हाँ चलो आप स्टार्ट कराओ लेसन। Okay, students. So, with the answers you gave, today's topic is objectives and levels of management. And levels of management. So, students, open your notebook and write down the objective of management. Objective of management. So, students, my question for you is, like a person wants to do a business. What is the purpose of him doing a business? Earning profit. Yes, very good. Very good, all the students who have answered. So, students, there are certain objectives of the management for doing for the smooth flow of the organization and as per the purpose stated in the management. So, the objectives of management are stated in three categories. The first one is organizational objectives. Organizational objectives. As you said that a business is done with the main motive of earning profits. Yes, very rightly said. But there are two other points under the organizational objectives. So write down in your notebooks. Organizational or बच्चे इसका objectives. चार्ट नहीं बनाया, चार्ट बनाया Under है this, इसका तो। कहाँ है चार्ट? सही है सर, वो मैं समरी में दिखाऊंगी सर, समरी में। चलो वैसे मैंने तो पहले कहा था कि चार्ट अगर यहाँ बनाया तो वो पहले यूज करो चार्ट को, है ना, ताकि जो एग्जामिनर आपका फाइनल में भी आएगा वो आपके 40 मिनट लेसन की वेट नहीं ना करेगा, है ना। ये सारे बच्चे ध्यान से सुनो भाई, ये हमारी कोशिश यही रहनी चाहिए कि हमने जितने भी टीचिंग एड बनाए हैं या कोई एक्टिविटी है वो स्टार्टिंग के 5-10 मिनट 15 मिनट में हम कर लें, ताकि जो एग्जामिनर है उसको हम जितनी मेहनत हमने करी है हम उसको पहले दिखा दें वो। ठीक है, अब इसने चार्ट बनाया, वो चार्ट एंड तक तो हो सकता है एग्जामिनर ना देखे सारा लेसन, है ना, है ना। तो आप इसको चार्ट के साथ कराओ सही है। चार्ट है नहीं आज? सर चार्ट है पर सर मैंने फिर एंड में रखा तो मैंने पूरा कवर नहीं किया उसको। अच्छा चलो चार्ट वैसे ही दिखा दो, चलो लेसन खत्म आपका, बस चार्ट दिखा दो। ओके हाँ ठीक है, हाँ विजिबल है बच्चे। ये जो नीचे वेल्थ लिखा है 4th पॉइंट इकोनॉमिक वेल्थ, वो नीचे लाइन को टच कर गया, वो टच नहीं करना चाहिए, ठीक है। ओके सर एक्चुअली वो ना मार्कर चल नहीं रहा था तो वो फिर फ्लो हाँ, में। और ये थोड़ा सा ना मतलब चलो अच्छा है। जो चार्ट आपने बनाया है वही सेम चार्ट आपने लेसन प्लान में भी लगाना है, ठीक है। लेसन प्लान में जो चार्ट लगाया है वो डिफरेंट है, वो लंबा सा करके लगा दिया,
सर वो ठीक है सर जगह कम थी उस पे। बच्चे, उसके अकॉर्डिंगली आपने जो सब्जेक्ट मैटर वाला कॉलम है वो बहुत बड़ा रखा है, उसको थोड़ा सा छोटा करो। सब्जेक्ट मैटर वाला जो कॉलम है, ठीक है। ओके सर, ठीक है सर। चलो बाकी ठीक है। Good morning, students. Good morning, ma'am. Right, good morning. Students, today we are going to discuss about a very interesting topic. But before starting the topic, I will ask you some questions. Don't give me collective responses. Students, first question is, who sets the Yes, students. Ma'am, please repeat the question. Could you please repeat the question? Who sets the goals and objectives in business? Management. Yes, very good. What is the first function of management? Planning. Yes, very good. In which function of management we arrange resources in systematic and logical order? Organizing. Organizing. Yes, very Organizing. good. We are going to learn about organizing. Students, organizing is the process of identifying and grouping of various activities and organization and assigning them to various persons. Organizing is the process of combining the work of a people working in the enterprise for undertaking various duties and responsibilities. Students, write down the definition in your notebooks according to Ralph C. Davis. According to Ralph C. Davis, organizing is a group of people who are cooperating under the direction of accomplishment of common goal. Organizing is a group of people who are working under the direction of leadership for accomplishment of common goal. Next is organizational process. The first step in organization process is identification and division of work. The first step in organizational is division of work. Division of work employs students. Should you written this in your notebooks? Yes. The division of work employs division of total tasks in order to lighten the burden and to bring specialization in an organization. The purpose is to bring specialization is to increase the efficiency of employees. Students, look at this. Here, in an organization, a person cut woods with the help of specialist machine, and at the second step, carpenter assembles the table,
and the table assembles are polished in the polishing department, finished in the polishing department, and the transport company collects the table and deliver them. In this way, all persons are engaged in different activities and do the same task again and again, and they become specialists in their task. Is it clear? Yes, students? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Grouped into the groups after the division of work. Group may be as functional group and the divisional departmentalization. In functional departmentalization, activities related to the common function are grouped under the one department. Like there are, in functional departmentalization, there are production department, second, finance department, marketing department, and HR department, human resource department. This is in the case of functional departmentalization. And next is divisional departmentalization. In divisional departmentalization, one product brought under the one department only. Like one department such as individual, like cosmetic department. In cosmetic department, separate production department, separate marketing department, finance department, HR department. Similarly, in case of garments, separate production department, separate marketing department, finance, HR department. In case of footwear, ठीक है बच्चे, बस करो। प्रतिभा बस कर, production बस department. करो। हाँ ठीक है बच्चे, टॉपिक क्या है ਤੁਹਾਡਾ? फिर ऑर्गेनाइजेशनल हाँ ਤਾਂ प्रोसेस और टाइटल ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ इंपॉर्टेंस। ਉੱਪਰ ਲੈਸਨ ਪਲਾਨ ਦੇ, है ना? ओके ਉੱਥੇ सर, ਲਿਖੋ मीनिंग प्रोसेस ठीक है। एंड इट्स इंपॉर्टेंट। नहीं तो ਤੁਸੀਂ मीनिंग एंड प्रोसेस ਇੱਕ ਚ ਕਰਾ ਲਓ, इंपॉर्टेंस अलग ਚ ਕਰਾ ਲਓ, ठीक है? प्रोसेस में ना सिर्फ 4 हाँ चलो पॉइंट्स ठीक है, है। इकट्ठा करा लिया तब भी ठीक है। अब वो प्रेजेंटेशन ऑफ टॉपिक में ध्यान देना, जो लाइन मैंने बोली है, ठीक है? एंड आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम स्टूडेंट्स टाइम टू हाँ टाइम जी, फॉर देयर एक्टिव पार्टिसिपेशन। यस सर। और ये चार्ट बनाया है ना एक, दिखाओ हाँ जी सर, दिखाओ। इंपॉर्टेंस का बनाना है। ठीक है बच्चे, हाँ ऐसे ही चार्ट होना चाहिए, मोटा लिखा हुआ है, अच्छा, वेरी गुड। और जो होमवर्क दिया है उसमें आपने पढ़ाया तो है प्रोसेस भी, लेकिन होमवर्क में प्रोसेस हाँ नहीं जी दिया कुछ भी। सर, वो हाँ, ना तो क्वेश्चन रह जरूरी गया। नहीं है कि जो होमवर्क में लिखना है वो एक ही लाइन लिखनी है ना? वो सब बच्चे ध्यान से सुनो, इसमें हम एक से ज्यादा लाइनों का होमवर्क भी दे सकते हैं, है ना? मतलब एक लाइन में दे दिया आपने, प्रोसेस दे दिया, दूसरे में इंपॉर्टेंस का कोई बात दे दी, है ना? तो इसको लिमिट मत करो कि लर्न एंड राइट द मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ, है ना? तो प्रोसेस भी हमने साथ में देना है। रिकैप्चुलेशन में क्वेश्चंस बढ़ाओ, कम से कम 4 या 5 क्वेश्चंस तो होने चाहिए रिकैप्चुलेशन, ठीक है? ओके सर, ट्रू फॉल्स और फिलिंग द हाँ ब्लैंक्स हाँ पूछ सकते हैं।
तो चार्ट अगर बनाने एक की चार्ट जरूरत पहले नहीं से है। ऑलरेडी बना लिया है लेसन प्लान में, फिर रिकैपिटुलेशन की चार्ट की जरूरत नहीं है, ठीक है। और हमने कोशिश यही करनी है कि रिकैपिटुलेशन का ना ही बनाएं, पहले चार्ट बना लें उसका, क्योंकि रिकैपिटुलेशन का चार्ट ना छोटी क्लासेस में अच्छा लगता है, हमारी +1 +2 क्लास है, इसमें नहीं अच्छा लगेगा, ठीक है। हाँ, वेरी गुड बच्चे। चलो नेक्स्ट कौन? Good morning. गुड मॉर्निंग। Today we are going to start. But before starting the topic, I will present the situation in front of you, and based on the situation, I will ask from you few questions. If you know the answer, just raise your hand and don't give collective response. My voice is audible Yes, to yes. you? Yes. Yes. आवाज आ रही है सबको? Okay. The situation is Mr. Mohan started up a business where firecrackers are being manufactured. Mr. Mohan started a factory where firecrackers are manufactured. He hired labor to work in the factory. Is the picture visible? He hired labor to work in the factory. The workers work manually in the business. They manufacture crackers by their hands, and there are no arrangements for their safety during work. Even Mr. Mohan has not installed any fire safety equipment in the business. Okay? Is the situation clear to you, or should I repeat? Is the situation clear, or should I repeat it again? Now I am going to ask questions. पूछो। Yes, go ahead, Shweta. It's clear, ma'am. Okay. Namni, clear? Yes, Shweta, go ahead. Okay. Okay. Now Yes. tell me, whose life is at risk? Workers' life. Yes, very good, workers' life. What will happen if fire occur in the factory? There will If be fire occur in the factory? loss of material and human. Yes, very good. There may be loss of material or human beings. What we call an uncertain situation where the chances of loss or damage occurs in the business. Risk. Yes, risk. You can say business risk. So students, today we are going to start with the topic business risk. Business risk, type and character. Characteristics of business risk. Characteristics of business risk. Now I am going to start with the meaning, please. Please note down on your notebook. Business risk refers to business risk refers to possibility of loss, possibility of inadequate profits, or loss due to unexpected events. So, what does business risk refers to? Business risk refers to possibility of inadequate profit or even losses due to unexpected events. As the future is always uncertain, we cannot fully predict what will happen next, and there are chances that there will be profits, but inadequate profit. There are chances of less profits or loss. The reason being unexpected events. The unexpected events of future
create risk to the business. Okay, my voice is audible to you? Okay. Have you written on your notebooks? Okay. Yes, ma'am. Risk to a business arise due to various causes. Like there is change in the demand of the consumers, there is change in the taste and preference of the consumers. Okay, I am giving you the example of Jio. Reliance Jio said, before the introduction of Jio in the market, there is about various service providers like Airtel and Idea or Vodafone. Okay, with the entrance of Jio in the telecom industry, with the introduction of Jio in the telecom industry, business risk arise to the other service providers. Okay. Now, write down the definition of business risk according to Wheeler. According to Wheeler. Wheeler says that risk is chance of loss. Risk is chance of loss. It is the possibility. It is the possibility. Risk is the chance of loss. It is the possibility of unfavorable occurrence. It is the possibility of unfavorable occurrence in the business. So risk is the possibility of loss. It is the possibility of unfavorable occurrence in the business. No one likes risk to be no one likes to face losses in the business. So business risks, everyone wants to avoid the unfavorable occurrence in the business. Have you written definition on your notebook? Yes, ma'am. Now, the other next topic is types of risk. Types of risk. Risk can be classified into two main categories. The first one is speculative risk. The first one is speculative risk. Speculative risk, and the second type is pure risk. Pure risk. Speculative risk. In speculative risk, there are chances of both profit as well as losses. But in pure risk, there are chances of falling loss. Write down on your notebooks what speculative risk. There are chances of profits or loss. In speculative risk, the business unit can earn profits or even incur losses. Speculative risk arise due to the factors which are controllable in nature, like change in the demand, change in the taste and preference of the consumer. Okay. In speculative risk, please note carefully. In speculative risk, there may be profit or loss. There are chances of either earning profit or loss. But in case of pure risk, there are chances of loss or no loss. No loss. Now you can see the difference. In speculative risk, there may be profits or loss, but in pure risk, there are chances of loss or no loss. The business is going to earn no profits. As in the case of fire, if fire occurs in the business, would they gain any profit out of it?
If the fire occurs in the business, there will be no profit. There will be the chances of only loss. So this is the definition of pure risk. Am I audible to you all? Yes. Yes. Okay. Have you written down on your notebooks? Yes. Okay. ठीक है Now we बच्चे, are going to श्वेता start बस with the next topic. बच्चे एक तो ਜਿਹੜਾ नॉलेज ऑब्जेक्टिव लिखा है सेकंड लिस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस रिस्क एंड Yes, sir. टाइप्स कहता टाइप्स Yes, sir. वाला अलग तो कर Types बात मेरी करिएगा. ठीक है, दो अलग तो कर लो, Yes, sir. दो Types चीजें वाला. किसी नहीं करनी है, ठीक है। सर टाइप तो सिर्फ दो ही हाँ थी हाँ, इसमें. उसका ऑब्जेक्टिव जो अलग बना एनसीईआरटी लो की ना, बुक है तो इसलिए मैंने सोचा दो. स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव अलग बना अच्छा ठीक है सर. ओके सर. और चार्ट दिखाओ कहाँ बनाया, ठीक है। रिकैप्चुलेशन का चार्ट भी बनाया है क्या? सर पेज लिमिटेड थे, वहां पे जगह ही नहीं बची इसलिए चार्ट बनाना पड़ा. 4 क्वेश्चन नहीं आ रहे थे वहां पे. 5 पेजेस का हो गया लेसन तो पूरे नहीं आएंगे इसलिए मैंने चार्ट पे लिख दिया रिकैप्चुलेशन. नो सर लिखा है बस यहाँ पे, जगह नहीं बची थी इसीलिए. ठीक है बच्चे बस करो। गुड Good morning, student. गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग Good morning, student. गुड मॉर्निंग मैम. How are you all? फाइन. Okay. Students, today we'll learn a very important topic of our today's life. But before starting my topic, I'll create a situation in front of you and ask you a few questions. If you know the answer, just raise your hand. Don't give collective answers. Biscuit. But after having that biscuits, she had a stomach pain because biscuits were expired. Do you get the situation, students? Yes. Okay. Now answer my questions. Which two parties were involved in this buying and selling? Buyer and seller. Exactly. Who was responsible behind the unfair trade practice as the biscuits were expired? Seller. Seller. Sorry? Seller. Okay. Was only seller responsible for this trade practice? No, the consumer also Buyer, she no. has to check. Buyer equally. Exactly. So how Sheetal is also responsible? She has to check He the has to price of check the product. all the. Yeah. Yes, very good. So students, it was her responsibility to check the expiry date. So students, our today's topic is consumer responsibility. Students, take out your notebooks and start writing the points. First one is consumer must exercise his rights. Write down. Under Consumer Protection Act, there are various rights granted to the consumer, but these rights are useful only when consumer exercise these rights.
consumer can file a complaint whenever he found any unfair trade practice. So students, what this point depicts, Consumer Protection Act gives us, as a consumer, give us various rights. These rights are useful only when we exercise these rights. We can file a complaint whenever we found any unfair trade practice. Okay, students, let's take an example. What is this? Yes, anyone? Dairy milk chocolates. Okay, students, I went to the market. I asked shopkeeper to give me dairy milk, but for the sale, he gave me a product named Daily Milk. The wrapper was same. इसके अंदर जो शेप है चॉकलेट की वो भी सेम थी. But I found the name after I found the change in the taste of that chocolate. So this is called an unfair trade practice. So I have the right to file the complaint against the seller. Do you get the point? Yes, ma'am. Okay. Next point is cautious consumer. Cautious consumer. Write down in its explanation. Consumer should not blindly trust the words of seller. He must insist on getting information about the quality, quantity, purity, utility, etc. of goods and services. Students, let's take an example. What is this? Lays. Yes. What is the price of this packet? ₹20. Yes, exactly. How can you get the information? Because it's printed in. Yes. So it is, as a consumer, it's our responsibility to check the whole label, ask the seller, check the ingredients, expiry date, manufacturing date, so that we could exercise our rights properly. Okay, students, shall we proceed further? Yes. Okay. ठीक है बच्चे, बस Students, next point is बच्चे विशाली बस. ठीक है, पीके टेस्टिंग ठीक ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਪੇਸ ਬਹੁਤ ਖਾਲੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਲੈਸਨ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਉਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ? Sure, sir. ਠੀਕ ਹੈ. ਇਹਦਾ ਅਗਰ ਇੱਕ ਚਾਰਟ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ. ठीक है सर, मैं बना लूंगी. सर एक चार्ट है नहीं सी ते लॉकडाउन की वजह नाल मटेरियल अवेलेबल हो नहीं रहा. हुण अज तो प्रॉपर मटेरियल यूज करूंगी मैं. हाँ हाँ जी सर. ठीक है बच्चे बस.